Hello everyone. I hope आप लोग अच्छे हो and you people are practicing problems, learning concepts. This video is going to be different because this time I'm going to discuss assertion and reason type questions focused for NEET students. Okay. So yeah, I got a request for this one long back. I'm really sorry I've taken this much time to start with this one even. But anyway, I will be making so many, in fact, on all the chapters. That is my target. So yeah, let us start with kinematics. ओके सो असर्शन रीजन क्वेश्चंस को देखो, सबसे पहले करने का तरीका क्या होता है वो मैं डिस्कस कर लूं. सो हमारे पास दो स्टेटमेंट होगा, राइट? एक स्टेटमेंट वन होगा एंड सेकंड वन विल बी योर स्टेटमेंट टू. सो सबसे पहले यू ट्राई फिगरिंग आउट इफ बोथ आर ट्रू और नॉट. अगर दोनों ही ट्रू दिख रहा है देन यू हैव टू सी इफ statement 2 is correct explanation of a statement 1 or not. So for that what you will do, you will read a statement 1 and then before you start reading statement 2 आप यहाँ पे because का एक लाइन यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है? सो स्टेटमेंट 1 में जो भी लिखा है उसके बाद you will start with statement 2 but before that you will say because. Okay, so we will practice this one. Let us start with this question. ओके सो देखो, स्टेटमेंट ए ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट वन ट्रू है, टू ट्रू है एंड टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर वन. बी क्या है तुम्हारा? वन ट्रू है, टू ट्रू है, लेकिन दे आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ. ओके, सो ये दोनों ही फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है. डन है? अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो हमारे लिए इजी हो जाता है. सो स्टेटमेंट सी एंड डी यू कैन सी. Now let us start reading the question. A body moving in a straight line may have non-zero acceleration at an instant when its speed is zero. So सबसे पहले आप statement one की validity पे जाओ, if it is true or not. So a body is moving in a straight line. It can have non-zero acceleration at an instant when its speed is zero. देखो, जब आपको कुछ भी ना समझ में आए, ट्राई थिंकिंग ऑफ सिचुएशंस वेयर यू हैव इनकाउंटर्ड सच केसेस. जैसे आपके पास मोशन में क्या क्या पढ़ा है आपने? मोशन अंडर ग्रेविटी. सो मोशन अंडर ग्रेविटी को ही अगर आप ध्यान से देखो, व्हेन यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड, व्हाट हैपन? देयर इज अ पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी इज जीरो. डन है? टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो. दैट इज व्हाई इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, because at this point velocity has become zero. It was going up and up because it had upward velocity, and the moment its velocity will become zero, thereafter it will start coming down. So just focus at this top point. At this point velocity is zero but acceleration is there downward, equal to acceleration due to gravity. So statement 1 is true. ठीक है? Now let us talk about a statement 2. If a body is thrown vertically upward, its speed at the instant when it reaches the highest point is zero, but its acceleration is this. So yeah, this is one example where this one is happening. But अगर आप because करके पढ़ते हो, a body moving in a straight line may have non-zero acceleration at an instant when its speed is zero, because if a body is thrown vertically upward, its speed at the instant when it reaches the highest point is zero, but its acceleration is this. But I mean, this is not explaining this one. This is one particular example for the statement one. But reason is not this one. Okay. So reason will be, I mean, there is still net force acting. Net force लग रहा है क्योंकि region may be like even if force is there, velocity can be zero. समझ रहे हो? So basically statement 2 is one example for statement 1, but it is not explaining statement 1, I would say. Okay, so option should be which one? It should be B. Statement 1 is true, 2 is true, and 2 is not the correct explanation for statement 1. ठीक है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता था? आई मीन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. डन है? सो एक्सेलरेशन कैन बी इक्वल टू व्हाट? Can be non-zero when velocity is zero. That you can explain how. I mean dv by dt को आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो acceleration. So change in velocity has to be there, not velocity has to be, I mean something positive. Change in velocity has to be positive or has to be equal to some value, positive or negative, whatever. So dv cannot be zero, but individually, I mean if you write vf minus vi, इन दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है. समझ रहे हो? सो एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे जाएगा. दिस इज जस्ट द एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट वन. चलो आगे करते. सो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन. अ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन
and with constant speed. देखो straight line है, speed constant है, it must have zero acceleration. Acceleration क्या होता है? dv by dt. So if a speed is not changing, I mean velocity, if a speed is not changing, magnitude of velocity is not changing. And since this is moving in a straight line, its direction is also not changing. So when there will be acceleration, if velocity changes, और velocity के पास दो चीज होता है, direction होता है, magnitude होता है. So either magnitude has to change, direction has to change, or both are changing. In that case, you will be getting acceleration. अगर दोनों constant है, तो acceleration zero होगा. So statement one is true. Now let us read statement two. A body moving along a curve with a constant speed may have zero acceleration. So body is moving along a curve uh, with a constant speed. Speed is constant, but at this point, जब body रहा होगा, then its velocity is in this direction. It is in this direction. So direction is changing. It means if direction is changing, then there will be acceleration. And it is saying it may have zero acceleration. This is not possible. Okay. So statement two तुम्हारा क्या होने वाला है? गलत. अब तो हमें because करके पढ़ने की जरूरत नहीं है. Statement one is true. Statement two is what? False. So C should be correct one. Let us check. Yeah. So C should be correct one. Now let us move ahead. A wooden ball and a steel ball of the same mass released from the same height in air do not reach the ground at the same time. So आपने देखा होगा, आपके पास सपोज कर लो हाथ में एक फेदर है, ठीक है, पंख बर्ड का, एंड आपके पास स्टोन भी है, दोनों सेम मास का है, एंड यू आर थ्रोइंग फ्रॉम द रूफ टॉप. ओके, सो यू विल फील लाइक कि ये जो फेदर है ना, इसको नीचे पहुंचने में कितना घटिया डायग्राम बनाया. एनीवे कैसे फेदर बनेगा? हाँ बेटर, पहले से बेटर. ओके, सो समथिंग लाइक दिस. और जब ये नीचे की तरफ आएगा, आई मीन यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज टेकिंग मोर टाइम एंड स्टोन फेल instantly almost. So obviously there is time difference. Why this is happening? Let us एनालाइज इट. क्योंकि देखो, आप इसको समझने की कोशिश करोगे, that will be the basically explanation for statement one, and then you just try to think that explanation is put in statement two or not, then only A will be correct. दूसरा मेथड ये भी है चेक करने का कि स्टेटमेंट वन को जब आप चेक कर रहे हो तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन इज रनिंग इन योर माइंड, एंड इफ दैट एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन स्टेटमेंट टू, देन यू विल बी टिकिंग ऑप्शन ए एज द करेक्ट. तो चलो इसको एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करते हैं. सो देखो क्या होगा, हमारे पास दो चीजें, दोनों का मास सेम है. सो वॉल्यूम क्या होगा? आई मीन मास इज सेम, वॉल्यूम विल डिपेंड ऑन व्हाट? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है? मास. डन है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, वुड एंड क्या है? Wood and steel. Okay, so density of wood will be less than density of steel. That is very clear, right? So if you have to calculate volume, that is m by rho. So volume is inversely proportional to density. So definitely volume of wood will be greater than volume of what? That of steel ball. सो वॉल्यूम ऐसा है. अब वॉल्यूम क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि देखो, जब आप देखते हो ना कि ये पंख को ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि this feather is immersed in air media, and air being fluid, it will apply force of buoyancy on it. Okay, and force of buoyancy क्या होता है? Volume of displaced fluid into density of fluid into g. So you need to check. So this rho is basically density of air, and this volume is what? Is basically the volume of body, because that body is immersed in air, and that will displace वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, राइट? सो अगर मैं यहाँ पे वुड की बात करूँ, इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो मैं बड़ा बनाऊंगी, एंड स्टील बॉल की बात करूँ, ऐसा बनाए. ठीक है. सो इस पे देखो, दोनों का मास सेम है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू बी सेम. सो mg, what will be force of buoyancy here? So volume of wood into density of air into g. And what will be the force of buoyancy here? Volume of steel into rho air into g. Now what you see here, which volume, which force is going to be, I mean, दोनों ही नीचे आ रहे हैं. इसका सिंपल मतलब ये है कि now downward force is dominating. It means mg is greater than vw rho air g, and here also mg is greater than vs rho air g. Okay, so net force acting in first case is equal to mg, uh, mg into how much you will be putting, that is mg minus vw rho air into g.
What will be acceleration? So acceleration will be mg minus vw rho air g divided by m. And what will be acceleration here? So in this case, it is going to be mg minus vs rho air g divided by m. Okay, so which acceleration is greater? You can see here, यहाँ पे जो force minus हो रहा है, that is smaller in value. Done है? So overall ये bigger है. So here acceleration is greater. ADAS is greater than A. And so, I mean, since acceleration of this one is greater and this one is smaller, it will hit the ground first. Okay. So, हमने कैसे explain किया इस चीज को? By taking their densities in account and all. Done it? So देखो statement 2 क्या कह रहा है? The apparent weight of body in a medium. Apparent weight यहाँ पे क्या है तुम्हारा? This is the apparent weight. समझ रहे हो? So, sorry, कहाँ थी मैं? Okay. Yeah, here I am, right? So yeah, the apparent weight of body in a medium depends on the density of body relative to that of medium. Yeah, it is depending on that. I mean, यहाँ पे जैसे आप अगर यहाँ पे जैसे इसको आप ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक करके आप क्या लिख सकते हो? M को क्या लिख सकते हो? VW रो W डन है. सो मास क्या होगा तुम्हारा? VW रो W G माइनस VW रो एयर इंटू जी. सो यहाँ से आप VW को कॉमन लोगे, देन यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? ओके, या सो VW को आपने कॉमन लिया एंड लेट अस टेक हियर रो एयर भी कॉमन ले लो. ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? रो W बाई रो एयर. ओके, एंड जी को भी हमने यहाँ पे कॉमन लिया, माइनस हाउ मच इट इज, which things we have taken common? VW and rho air and G minus 1. Okay, so this is called your relative density. So obviously this apparent weight is dependent on this relative density thing, because देखो VW rho air G, this is this is one thing and then this is another thing. So इस चीज पे depend कर रहा है, right? So the apparent weight of body in a media depends on the density of body relative to that of media. सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि एफ नेट जो है वो तुम्हारा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? दिस इज डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी ऑल्सो, and obviously on the density of media, because media is applying that force of buoyancy. So statement 2 काफी ज्यादा वही है, the thing that we have discussed in statement 1. Okay, so statement 2 is the correct explanation of a statement 1. ऐसे आप because करके पढ़ सकते हो. A wooden ball and steel ball of same mass released from same height in air do not reach the ground at the same time, because apparent weight of body in a media depends on the density of body relative to that of media. And here density of wooden ball with respect to media won't be same as density of steel with respect to air media. Then so that is why they are different. So yeah, दोनों ही एक दूसरे का क्या है? Explanation है. I hope it is clear. Now let us talk about this one. Question क्या कह रहा है? If the displacement time graph, okay, of motion of a body is a straight line parallel to the time axis. So this is displacement time and graph is what? Parallel to the time axis. Then it follows that body is at rest. आप कह सकते हो कि body is at this point. Let's say this S is equal to 5 meter. So body is at 5 meter no matter whatever is the time. इस ग्राफ को आप कैसे रीड करोगे? जैसे 2 सेकंड पे बॉडी तुम्हारा 5 मीटर पे है, 4 सेकंड स्टिल बॉडी इज एट 5 मीटर. So it feels like body is at one position. So it is not moving. It is at rest. So yeah, statement 1 is true. Velocity is equal to the rate of change of displacement. That is also true. Done है? So क्या स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन? पढ़ने की कोशिश करो बिकॉज करके. बॉडी इज एट रेस्ट बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सही है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा. So there is no velocity and so the body is at rest, right? So yeah, statement 2 is correct explanation for statement 1. So correct option should be which one? It should be A. ठीक है, चलो. If the velocity time graph of the motion of body is curved, then the body is either uniformly accelerated or uniformly retarded. Uniformly accelerated कहने का मतलब a constant है. Uniformly retarded means also that value is constant. So velocity time graph we are talking about. ठीक है, then this body is either uniformly accelerated. So if velocity time graph of the body is what?
is curve. So let's say it is this curve. Okay, so I mean velocity time graph ka both area and the slope is significant. So slope gives you what? That is slope is equal to what? dv by dt. देखो थोड़ा मैथमेटिक्स पार्ट हमारा क्लियर होना चाहिए. जैसे कोई भी ग्राफ हो y वर्सेस x का, कैसा भी ग्राफ आपने बनाया, इस ग्राफ का स्लोप किसी भी पॉइंट पे विल बी इक्वल टू dy by dx. So if along y-axis is velocity, along x-axis is time, then slope of that graph is dv by dt. And we know that dv by dt is what? Acceleration. So slope of this graph is going to be acceleration. Now this is a curve. अगर कोई curve है, then its slope is going to change क्योंकि यहाँ पे आप tangent बनाओ. Then this is making how much angle with the positive direction of x-axis? Theta 1, let's say. यहाँ पे आप tangent बनाओ. How much angle it is making with the positive direction of x-axis? Theta 2. So what is going to be velocity at this point? Tan theta 1? Because slope is what? dy by dx? Yeah. What angle this tangent is making with positive direction of x-axis? Tan of that angle is dy by dx. Done it? So this is a basic mathematics thing. So here you can clearly see theta 1, theta 2 are different. So slope is changing, right? It means acceleration is not constant. It means the statement false. ठीक है. The slope of velocity time graph gives the acceleration. That is very much true. क्योंकि vt ग्राफ का स्लोप क्या होगा? dv by dt. और हमें पता है dv by dt acceleration होता है. So this is true. So statement 1 is false, statement 2 is true. So D is going to be your correct answer. ठीक है. चलो आगे बढ़ते. A body is projected horizontally with a velocity u from the top of a building of height h. So this is a building of height h, and from top of it you are projecting it horizontally with velocity u. ठीक है. It hits the ground after this time root under 2h by g. सो पहले तो इसकी वैलिडिटी को हम चेक करते हैं कि ये गलत है या सही है. सो दिस इज अ केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, राइट? यू हैव गिवन इट इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. सो अगर ग्रेविटी नहीं होगा देन दिस विल कीप ऑन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u. But because there is gravity at every point, mg is acting downward. So instead of going straight like this, it will curve downward. So it will go in the horizontal direction, also vertically down because there is gravity thing. Okay. Now, I mean, it hits the ground after a time this. अब देखो हिटिंग करने का क्या मतलब है? यहाँ पहुंच गया. यहाँ पहुंचने का मतलब क्या है? x अगर आप इसको 0 0 मान के चलो, then coordinate of this point क्या होगा? x here is 0 and y here is h. So in x direction displacement has been equal to this much. Let us say coordinate of this point is x is r and y will be here 0 because this is x axis, right? So I mean x direction में displacement क्या हुआ है? r, that is not given in our question. And in the y direction displacement is how much? This is h. This is given. So let's say from here to here it came in time t. So in same time t it has traveled horizontally by r and vertically by h. So we can use vertical motion in order to calculate time t. How? चलो second equation of motion use करते हैं. We can use it because acceleration is constant in the y direction, that is acceleration due to gravity. So half at square. और जब भी आप ये इक्वेशन यूज करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन आप सही से मार्क करना. सो वर्टिकली डाउन में मोशन हो रहा है, चलो मैं डाउन डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूँ. So displacement has happened in the vertically downward direction. So S is equal to H. Initial velocity in the y direction was 0 because initially it got projected with a speed u. So this is 0 plus half g t square. G will be positive because downward direction को हमने क्या लिया? पॉजिटिव लिया. So t कितना हुआ तुम्हारा? 2h by u. This is sorry 2h by g. So this is this thing. So this is correct, right? And a statement 2 कह रहा है the vertical and horizontal motion can be treated independently. Yes, we can treat it. And that is how we are getting this answer. We have treated vertical motion independently, horizontal motion independently. So we have no information of r. So we use the vertical motion, which is not interfering with the horizontal motion, to calculate for time t. So अगर आप कहते हो कि it hits the ground after this time because the vertical and horizontal motion can be treated independently. So अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये रीजन है कि नहीं, तो आप ये सोचो कि इसको डिस्कस किया, आंसर तक पहुंचे हो कैसे? By taking y direction of motion. And while you are dealing with y direction of motion,
That is not mixing the x direction motion. So independently we are treating motion along x and y. So yeah, this is correct explanation. So I will say answer is A. Okay. चलो आगे बढ़ते. A body is projected from the ground with kinetic energy K. So K kinetic energy say you have thrown at an angle of 60 degree with the horizontal. If air resistance is neglected, its kinetic energy when it is at the highest point of its trajectory will be K by 4. Let us talk about this motion. So this is talking about this one, right? So we have thrown it with what angle? I mean 60 degree with the horizontal. Let us say with u velocity, we are throwing it. Done. So kinetic energy at this point will be equal to how much? Half mu square. And this is given as equal to k in our question. At the top point, what is going to happen? You know, in basic uh, what projectile motion, at the top point, this is the highest level in the vertical direction. It means here vertical velocity must be zero. It means here velocity should be only in the horizontal direction, because horizontal direction mein there is no friction acting, nothing is to retard it. So whatever was the initial horizontal velocity, that is u cos 60, will be here also, so that is u by 2. So what is kinetic energy here? So यहाँ अगर मैं निकालूं, I will be writing half m u square by 4. So that is nothing but k by 4. ठीक है. और जब आप यहाँ आते हो ना, so you are moving under conservative field. I mean, only force acting is the gravitational force, which is a conservative force. So, under the influence of conservative force, I mean, energy is not going to get dissipated. So, vertically, agar aap dekho, here you were at height 0, and finally also you are at height 0. So whatever, I mean, when you were moving up, kinetic energy was decreasing because potential energy was increasing. And here again h is 0, so nothing is potential, only kinetic. So whatever was the kinetic here will be here. ऐसे भी आपको पता होगा, यहाँ पे जब बॉडी हिट करती है, then it hits with the same velocity u, making an angle 60 with the horizon. Okay, so here also kinetic energy will be k. For extra information I have given. So yeah, this is true, right? अब देखो सेकंड क्या है. At the highest point of trajectory, the direction of velocity and acceleration of body are perpendicular to each other. So yeah, at this point velocity is only horizontal, and acceleration is in this direction. So yeah, these two are perpendicular. But this is true, but this is not explanation of one. Explanation of one kya hai? At the highest point, velocity is equal to the horizontal velocity, and so we are getting that. Okay. So yes, so, this is something different. So what you will be saying? One is true, two is true, but two is not correct explanation. B we should go with. Yeah, that is true. Now let us solve this one. One end of a string of length r is tied to a stone of mass m, and the other end to a small pivot on a frictionless vertical board. So this is the board, this is the pivot, let us say, and from here this string of length r with the stone at its end is hanging like this. Okay. Now the stone is whirled in a vertical circle. So this circle is not, something like circle on the board. I mean, this is in a vertical plane. Okay. The minimum speed the stone must have when it is at the topmost point on the circle so that string does not slack. Okay. So string को slack नहीं होने देना है. Slack कहने का मतलब lose नहीं होने देना है. Means वहां पे tension को I mean we don't want tension to be zero. In short we can say. Okay. So topmost point पे आप सबसे पहले motion को guide करो. जैसे यहाँ पे ये ball है. ठीक है. What are the forces acting on this ball, on this stone? So that is your mg and that is your tension. Now, just imagine, I mean, this ball has no velocity. So in that case, mg will take it down. और आपको भी पता है जब ये डाउन की तरफ ऐसे गिरने लगेगा, it will feel like under mg if it is falling, it will feel like it is in free fall. So tension won't be there in that case. It won't exist. I mean, there won't be any reason to exist it. जैसे tension string में कब आता है? When, I mean, in this case, there is tension in the string. Why? Because it is force mg is acting and this mg force is pulling the string sort of. Done है? यहाँ पे देखो string mg ऐसे लग रहा है. It doesn't feel like it is pulling the string. So tension का कोई case नहीं बचेगा. So string will become slack. Okay. लेकिन अगर mg is getting utilized somewhere else, let us say it has a velocity v in this direction. So then we will say that this is moving in a circle, right?
And if it has non-zero velocity at the top, then there must be centripetal force acting towards center, such that that force, which is T plus mg here, will be equal to mv square by r. Now for v to be minimum, we can make t zero, okay, for minimum case. So t को जीरो करते, mg तो जीरो हो नहीं सकता, t को आप जीरो करो, so v कितना मिलने वाला है आपको, रूट अंडर rg. So in this case, what I'm doing, mg is getting utilized in providing it with required centripetal force. So this mg then is not, I mean, bringing it down, and in that case string, there won't be tension. So that is not happening. Mg is getting utilized, and that is why at the top point it must have some positive velocity. Done it. So you must have done the cases where you're giving certain minimum velocity at the bottom so that it can complete the vertical circle. And in that case, at the top, you don't take velocity to be zero, you take tension to be zero. And this is the reason, because mg has to get consumed by something, otherwise the string will become slug. Okay, so yeah, velocity has to be root under gr. Statement 2, at the topmost point on the circle, centripetal force is provided partly by tension in the string and partly by weight of the stone. Yeah, this is correct. क्योंकि देखो centripetal force is getting provided by this, and in order to make v minimum, we have met t0, right? So this is a very specific case. So, I mean, while reaching to the conclusion, this one, we have written one very basic equation. From this equation, we are getting the answer. And this equation only is written here in the statement 2. So, yeah, statement 2 is going to be the correct explanation for statement 1. Okay. So, yeah, answer should be A. चलो, सो दिस वन इज द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन. आई नो नीट वाले लोग इसको करते नहीं है, बट ये कोई अलग सा केस नहीं है. दिस इज सिंपली 2D मोशन थिंग. अगर 2D मोशन आपके सिलेबस में है, देन इट मे कम. एंड आई हैव टेकन ऑल दिस असर्शन एंड रीजन फ्रॉम व्हाट इज दैट बुक. ओके, मैं भूल गई. I will let you know. I mean, in the on the thumbnail it will be there. But anyway, I forgot it. So, uh, I mean, question relevant ही है. That is what I want to say. So देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ प्लेन is less than that when it is projected downward from the top of the same plane with the same speed. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दिस इज द बॉटम, ठीक है. यहां से सपोज कर लो मैंने अल्फा एंगल पे फेंका, एंड देन इट इज गोइंग लाइक दिस, सो दिस इज द रेंज. एंड द सेकेंड केस में ये कह रहा है कि सेम एंगल से और सेम वेलोसिटी से आप डाउनवर्ड फेंक रहे हो from the top. So I am throwing it from this point, making an angle alpha like this time in the downward direction. So दोनों ही केस में रेंज क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये कह रहा है. और ये भी कह रहा है कि इस केस में जो रेंज होगा, दैट विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ दिस केस. सो देखो, इसके लिए तो तुम्हें मैं कहूंगी कि ज्यादा कैलकुलेशन में जाने की भी जरूरत नहीं. जस्ट बाय लुकिंग एट थिंग्स आई कैन से, जैसे इस केस में अगर आप देखो, हॉरिजेंटल वेलोसिटी की बात कर लो, ठीक है. सो दिस इज इन यू कॉस अल्फा, ठीक है. एंड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, आप देख लो. जब हमारा प्रोजेक्टाइल का केस ऐसा होता है, देन वी सिंपली से, आई मीन, फोर्स एक्टिंग इज mg, and this is in this direction, horizontal is this, so mg has no component along the horizontal, so there is no horizontal acceleration. but यहाँ पे हमारा horizontal ये है, ठीक है. और g का लाइन क्या है तुम्हारा, ये है. so g has component in this direction, and that is going to be g sin alpha, right? So initial velocity है u cos alpha, और acceleration along the x direction is g sin alpha, which is opposite to the direction of velocity. Done है. So this is going to retard the velocity, and so horizontally distance covered will be something. Let us talk about this one. यहाँ पे अगर आप देखते हो, then g sin alpha is in this direction, and u cos alpha की अगर आप बात करो, that is also in this direction. So initial horizontal velocity is down, acceleration in the x direction is down, both are in same direction. So in this case, horizontal distance covered will be more. Done it. So अगर यहाँ पे ये कह रहा है maximum range on an inclined plane when a body is projected upward from the base of plane is less than that when it is projected downward from the top of same plane with the same speed, then this is true. Okay, so this is true. Now, statement 2, the maximum range along an inclined plane is independent of the angle of inclination of the plane. This is not going to be true. Okay, मैंने G को
ब्रेक करने के लिए ये थीटा एंगल आप लोगे, ठीक है। मैंने कहीं अल्फा बोला है तो प्लीज मुझे माफ करना। आई मीन जी को जब आप ब्रेक करोगे तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का हेल्प लोगे, राइट। सो या ये तो ट्रू नहीं है। द मैक्सिमम रेंज अलोंग इंक्लाइन प्लेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा देन दिस इज फॉल्स। डन है। सो आंसर तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, आंसर शुड बी सी। स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। चलो मैं तुम्हें थोड़ा इंक्लाइन प्लेन का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। डन है, क्योंकि मुझे पता है बच्चे जब वीडियोस देखते हैं, खासकर एग्जाम जब पास होता है, दे वांट एवरीथिंग एट वन प्लेस, राइट। अगर तुम्हें रिवाइज करना है इस टॉपिक को, अदरवाइज तुम स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हो, बट इफ यू वांट टू रिवाइज इट आई विल लेट यू नो। जैसे देखो, मैंने क्या किया, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। सो यू दिस इज मेकिंग एन एंगल अल्फा हियर एंड दिस एंगल इज थीटा। Whatever is the nature of projectile thing, I mean ground to ground, ground to height, height to ground, incline, whatever it is, we are interested in two three things, right? Time of flight, maximum height and range. ठीक है। So time of flight निकालने के लिए what we do, whenever I teach, I just say it very clearly that you write equation of motion in the y direction, and then I mean from there you will be getting time of flight. How? जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो एक्स वाई डायरेक्शन मार्क कर लो। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ओके। सो दिस इज दिस थिंग। अगर मैं यू एक्स की बात करूं, देन यू एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, यू कॉस अल्फा, एंड यू वाई विल बी इक्वल टू हाउ मच, यू साइन अल्फा, ठीक है। what will be your ax? So g is in this direction, so this is going to be g sine theta, so this is g sine theta in the minus x direction, and ay is equal to how much, g cos theta in the downward direction. Done it? So this is this thing, I mean in this direction. Here perpendicular axis is what, perpendicular to the plane. जैसे ground to ground करते हो तो ये आपका surface है, surface से perpendicular लेते हो ना, यहाँ पे surface ये है, तो along the surface x axis, so along the surface x axis and perpendicular to the surface y axis. So that is how we treat it. अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का, यहाँ से सपोज कर लो यहाँ आया ये, ठीक है। सो मैंने काफी जनरल केस ले लिया, टॉप से बॉटम से टॉप तक पहुंचा दिया उसको। सपोज कर लो ये ऐसे गया, एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, आई मीन टाइम ऑफ फ्लाइट। आप ध्यान से देखो, initially it was here on the inclined plane, finally it is on the inclined plane, so along y direction there has been no motion, right? Initial and final is same। समझ रहे हो? So if I talk about initial position as this and final position as this for motion along the y direction, then here h is 0, that is y is 0, and here also y is 0. So displacement along the y direction in time equal to time of flight is 0. And that is why I suggest using s equal to ut plus half at square equation in y direction in order to calculate time of flight. क्योंकि उस केस में तुम्हारा s 0 हो जाएगा। Done है? So displacement is 0. Initial velocity u sin alpha t minus half, माइनस क्यों ले रही हूँ देखो, इस डायरेक्शन को मैंने प्लस लिया, इस डायरेक्शन को प्लस लिया, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐसे है और इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन ऐसे है, ठीक है। सो दिस इज ए वाई, दिस इज ए एक्स, सो दिस इज ऑपोजिट। डाउन डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रही हूँ और आपको इसको पॉजिटिव लिया है, ठीक है। सो माइनस ए कितना है तुम्हारा, जी कॉस थीटा टी का स्क्वायर। सो यहाँ से तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिल जाएगा, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। ग्राउंड टू ग्राउंड केस में क्या आता है, 2u साइन अल्फा बाई जी, क्योंकि जी का कोई कंपोनेंट ब्रेक नहीं होता, कंप्लीटली जी वर्टिकली डाउन सेंस में होता है। So this is this. Okay. Now if you have to calculate what, maximum height. So maximum height का point ये है, done है, and this distance is getting covered in what amount of time? Time equal to half the time of flight. और इसको लिखने के लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द वाई डायरेक्शन लिख लो। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. So at the highest point, that is at this point, uh, velocity in the y direction is what, 0, that is why further it is going down thereafter, okay. So this is going to be 0 and this is equal to how much, u square sin square alpha minus 2g cos theta into s, so s y है ये,
So maximum height, that is sy, is equal to how much? U square sin square alpha by 2g cos theta. तो देखो याद रखना बहुत ही सिंपल है, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u sin अल्फा बाई जी, यहाँ पे g की जगह g cos थीटा होगा, ठीक है। वहां पे हाइट कितना होता है? u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाई 2g। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राउंड टू ग्राउंड, राइट। एंड यहाँ पे जी की जगह क्या है? जी कॉस थीटा। सो इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रेंज। रेंज निकालने में ना तुम्हें थोड़ा फॉर्मूलाज एंड ऑल बहुत सारे पुट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो अगेन रेंज के लिए भी हम सेम लॉजिक यूज करते हैं। रेंज आप कैसे निकालोगे? रेंज इज द मैक्सिमम डिस्टेंस गेटिंग कवर्ड इन द एक्स डायरेक्शन, एंड सो this distance we are interested in calculating. Which one? This one. And this is the distance covered in x direction in the time equal to time of flight. So s equal to आप क्या लिखोगे? ut plus half at square. x direction के लिए लिखो, u is u cos alpha, time of flight यहाँ पे लिखोगे, and that is 2u sin alpha by g cos theta, and this is going to be minus because acceleration इधर था, ठीक है। So half g how much? Sin theta, right, into 4u square sin square alpha divided by g square cos square theta. Okay, so एक g से यहाँ g cancel होगा, this two will get cancelled, and whatever is common पहले आप उसको बाहर ले लो। So 2u square, ओके मैंने कुछ तो गड़बड़ किया, cos अल्फा नहीं, सही किया, 2u square and by g cos theta into sin alpha. This is what we can take as common, and here we will be left with cos alpha minus यहाँ पे कितना बचने वाला है? दैट इज गोइंग टू बी योर साइन थीटा साइन अल्फा बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट? 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, एंड दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू हाउ मच? cos a plus b, right? So a plus b कहने का मतलब अल्फा प्लस थीटा बाई कॉस थीटा, सो स्क्वायर कर लो यहाँ पे। So this is the formula we are getting. Now if you have to maximize this range, so इस रेंज को आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो? यहाँ पे देख लो कांस्टेंट क्या क्या है, पहले ये फिल्टर कर लो। सो अल्फा इज ए कांस्टेंट बिकॉज दिस इज द इंक्लाइन, नो, थीटा is constant, right? This is inclined plane का inclination. For this projectile motion you cannot change this because this is surface thing, but yes, in order to maximize range you can do something with the angle of projection, that is alpha here is the variable. So इस केस में तुम्हारा 2u square g cos square theta is the constant into sin alpha cos alpha plus theta. And why I'm interested in variable? क्योंकि in order to maximize range, what you will be doing, you will be, I mean maxima of the function आप कैसे निकालते हो? रेंज को मैक्सिमाइज करना है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ रेंज, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है उसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। सो डी आर बाई डी थीटा को पहले आप जीरो करो, ठीक है। सो जो आप मेथड जो यूज करते हो यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करना, इफ ये आपका टास्क है, ठीक है। सो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे एंड उसको जीरो से इक्वेट करोगे, देन यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ थीटा, और थीटा कितना आएगा? पाई बाई 4 माइनस, सॉरी, अल्फा आएगा, अल्फा इज द वेरिएबल, राइट, मैं बार बार थीटा क्यों लिख रही हूँ? सो दिस इज अल्फा, अल्फा ही लिया ना मैंने वेरिएबल, या। So this is alpha is equal to how much? That is your pi by 4 minus theta by 2. और इस वैल्यू को जब आप रेंज में रखोगे ना, आई मीन अल्फा के इस वैल्यू को, देन यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम रेंज एज इक्वल टू हाउ मच? यू स्क्वायर बाई जी, अब करके देखना, इंटरेस्टिंग होगा, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा इज व्हाट, या दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। सो ये वैल्यू आता है। अब देखो, हम अगर तुम स्टेटमेंट में जाते हो ना, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला था? मैक्सिमम रेंज अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, इट इज डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। और सेम जो भी अभी तक मैंने किया ना, अगर सेम चीज यू आर गोइंग टू डू फॉर ए केस वेयर यू आर थ्रोइंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप, मेकिंग सेम एंगल विद द हॉरिजेंटल, देन मैक्सिमम रेंज जो तुम्हारा आएगा ना, यू स्क्वेयर बाई जी 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। So this is a smaller denominator, so you are going to get maximum value, okay, more greater value than that of this one. So yeah, this is the basic thing. Now let us move ahead.
In a projectile motion, velocity of body at a point on its trajectory is equal to slope at that point. So in projectile motion, उसका ट्रेजेक्ट्री आप बनाते हो ना, कैसा होता है, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स. सो वाई ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है वो, और साथ साथ इधर भी जा रहा है. सो वाई एक्स, वाई वर्सेस एक्स का अगर आप डायग्राम बनाते हो, दिस विल गिव यू द ट्रेजेक्ट्री, राइट. सो दिस इज द ट्रेजेक्ट्री. इस ट्रेजेक्ट्री का और इस ग्राफ का स्लोप अगर आप चेक करो, तो स्लोप विल बी वट एवर इज अलोंग द वाई एक्सिस, चेंज ऑफ दैट डिवाइडेड बाई वट एवर इज अलोंग द एक्स एक्सिस, उसका चेंज. सो डी वाई बाई डी एक्स is definitely not velocity. ठीक है, so this is wrong. The velocity of body at a point on its trajectory is equal to slope at that point. ये गलत है. ऐसे भी अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप टॉप पॉइंट को चेक कर लो. जैसे कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप सोचो कि क्या ये किसी पॉइंट पे हुआ है. सो टॉप पॉइंट बहुत ही अच्छा चेक होता है. यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी होता है u cos थीटा. एंड यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो, देन दिस इज द टेंजेंट, डन है. एंड दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. सो विथ एक्स एक्सिस इट इज मेकिंग जीरो एंगल. सो tan of zero is what, zero. So slope is zero. Slope is zero but velocity is not zero, right? So contradiction है, इसका मतलब इसका slope is not equal to velocity, right? So this is false. The velocity vector at a point is always along tangent to the trajectory at that point. So yeah, definitely, velocity at any point on the trajectory will be tangent to the trajectory. क्योंकि किसी भी ट्रेजेक्ट्री पे जब आप जा रहे हो, कहीं पे भी हो, आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, tangent to that trajectory at that point, right? So second one is true. So statement 1 is false and statement 2 is true. So correct option should be D1. Yeah. Now let us move ahead. In a uniform circular motion, centripetal force is always perpendicular to the velocity vector. Uniform circular motion. Uniform circular motion का मतलब क्या होता है? If you remember, constant speed. Speed क्या रहता है? Constant. And it is said that the centripetal force is always perpendicular to the velocity vector. So if you remember, centripetal force ऐसे होता है, velocity vector is this. So yeah, they are what? Perpendicular to each other. And it is said it is always perpendicular to the velocity vector. Then the force does no work on the body and its kinetic energy remains constant. Okay, so देखो, I mean, clearly you can see statement 2 is explaining statement 1, क्योंकि अगर ये perpendicular नहीं होता है, in that case force, जैसे suppose कर लो FC इधर है, suppose, so FC will have component along the velocity. So if there is a force along the velocity, velocity magnitude will change, which is not the case here. And if velocity magnitude is changing, I mean, kinetic energy will change, right? So if a speed is constant, kinetic energy has to be constant. It means force should not do any work on the body. And for that, velocity should be perpendicular to the velocity. Force should be perpendicular to velocity. So ऐसे भी power आप लिखते हो ना, F dot V लिखते हो. So if speed is staying constant, it means no power is getting delivered to the body by the force. It means दोनों के बीच का angle क्या है? 90 degree है, right? So, in a uniform circular motion, centripetal force is always perpendicular to velocity vector, because force does no work on the body, because force has to do no work on the body, and its kinetic energy has to remain constant. Then only it is uniform circular motion. Okay, so I will be ticking option. I hope you are getting a bit more good at it. चलो, in a non-uniform circular motion, कहने का मतलब here speed is not constant. Speed not constant. The particle has two accelerations. Yes. जैसे जहां पे speed constant होता है, what happens? Only velocity का direction is changing, and because of direction change, we get acceleration, which is centripetal acceleration. Here, non-uniform circular motion में speed is changing. It means there is force acting along the tangent also, and definitely if it is moving in a curved path, then there should be force acting towards center. That is very much required. Okay, so two forces are there, and because of these two forces, there will be two acceleration, one in this direction, another in this direction. So the particle has two acceleration, one along tangent to the circle and other towards the center of circle. So yeah, this is true.
In a non-uniform circular motion, the magnitude and direction of velocity vector both changes with time. Both are changing with time. Magnitude is changing, that is why we are getting tangential acceleration, and direction is changing, that is why we are getting centripetal acceleration. So statement 2 is explaining statement 1, right? I mean, you can say uh, in a non-uniform circular motion, particle has two acceleration, one along tangent, other towards the center, because in non-uniform circular motion, magnitude and direction both changes with time. So option should be one. Yeah. चलो आगे चलते हैं. Some more question. In a non-uniform circular motion, acceleration of particle is equal to sum of tangential acceleration and centripetal acceleration. So this way and this way. But here should be the term like vector sum. Simply sum लिखा है, it sounds like a scalar sum, which will be incorrect. So इसको मैं incorrect करूंगी. The two accelerations are perpendicular to each other. That is true. So statement 1 is false and 2 is true. So D should be correct. Okay. Now, in a uniform circular motion, kinetic energy of body remains constant. Yes, because the speed is constant. Statement 2, the momentum of body does not change with time. This is false, right? क्योंकि circular motion में आप देख रहे हो velocity vector change हो रहा है और momentum क्या होता है mv. So momentum is a vector quantity. It has both magnitude and direction. So magnitude of momentum is constant, not momentum is constant, because its direction is changing. So momentum is changing. So this is false and this is your true. So C should be correct. Yeah, this is correct. Now let us do the last question. In a uniform circular motion, the acceleration is always directed towards the center of circle. Yes, uniform कहने का मतलब velocity magnitude is not changing, and because of direction change in velocity, we get centripetal acceleration. Okay, so this one is correct. Otherwise, the speed of body moving along the circle will change with time. So yeah, if acceleration is not towards center because of direction changing, if it is not towards center, let's say it's in this direction, then that acceleration will have component along the tangent. Done है? And in that case, velocity will no longer stay what constant in magnitude. So in uniform circular motion, acceleration को center की तरफ होना ही चाहिए. Then only this force won't be doing any work in the direction of motion, and then only magnitude will stay constant. Then है, so statement 2 वही कह रहा है, otherwise the speed of body moving along circle will change with time. And if changes with time, तो statement 1 wrong हो जाएगा. यानी कि statement 2 is explaining statement 1, right? So yeah, that is true. So answer should be A. I hope it is clear and I hope you enjoyed this session. But in case you are having any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Next that we will be doing will be laws of motion. ठीक है? चलो next video में करेंगे. तब तक के लिए bye bye, take care and keep on solving more number of questions and keep on interacting. Okay? Bye, take care.